Welcome traders. It's a beginning of buy or sell learning video series. So let's understand one of the favorite tool among intraday traders, that is VWAP. So VWAP trading, price trading above VWAP bulls, price trading below VWAP bears, price is taking support bulls, price is taking resistance from VWAP bears. Okay. Price is overlapping the VWAP. It's a no trade zone. These are the things are in the first priority list. Yes, which most traders know. But what most traders ignore, avoid कौन से सिनारियो पे मैक्सिमम ट्रेडर्स अवॉइड करते हैं, दैट इज लोकेशन. Every support price taken from VWAP सही नहीं है. Every resistance taken from VWAP is not strong BS. अब we have to very clearly understand the bulls versus bears activity which is going on in the market using the tool VWAP, but adding with location where it is happening. That is more important. How it is happening, price taking support, price taking resistance, sideways breakout failure, this is fine and fair. But where? Location is the important task when it comes to your intraday trading. VWAP may there is two things which is need to be tracked: the close of the VWAP, previous close, and ongoing VWAP. Okay, so now it's very simple. VWAP close हो रहा है, next day market opening के हिसाब से VWAP starts getting plotted. If you notice here, this is the close of the VWAP. Next day made a gap down opening. So VWAP starts from this point only. Okay, so now whether we need to compare the previous close of VWAP with the ongoing VWAP, nahi, we are not gonna compare it. We are gonna use it with the location of price. Price is currently trading here. For an example, price is trading above VWAP. So you have to create a clear-cut understanding. Price is trading above VWAP. Point number one. Now, current price where it is trading. Previously, it is a sideways to down move, right? Now price is trading up. Yesterday, same location, it was dominated by bears. So two opposite scenario, pay price is trying to trade. So in this location, I am using VWAP to get one additional clue whether the bulls who are trying to come today in the previous bears location, are they strong enough or not? That's the question. How to identify strong enough? Price easily crossing VWAP, easily going up, super strong. Number one. Price crossing, taking some time, but getting a rejection from the VWAP, this is strong. When the price is at the opposite location, opposite bears have took control. यहाँ पे bulls are taking support and try to take control in terms of the price action, right? Price taking support. So this is a good valid confirmation along with the VWAP. So always using VWAP as an entry is not a good way of trading. Taking it as purely as an entry tool, no. But taking it as a information, grabbing the clue, looking at the location, and then using VWAP as an entry tool. This is the ultimate pro level. But most traders are only focused on entry. कब मुझे entry मिलेगा, कहाँ पे entry मिलेगा? Entry पे profit consistently नहीं बनेगा. Be very clear. You have to be having the C cube, clarity, clue and conviction. Without this, if you are in urgent to make profit, market will end up making you losses only. Because यहाँ पे your perspective has to change. Any tool, any method you're using, first you have to understand how and what is going on. If you want to drive a car, you need to know driving. Without driving, car को आप कैसे drive करोगे? If you don't know driving, you need to have a alternative driver, right? But नहीं sir, I like to drive car. Correct. उसके लिए आपको driving पता होना चाहिए. Same way,
If you want to make profits in the market, you have a tool in front of you. Okay sir, VWAP is there, now I'll be making money. ऐसा नहीं बनता है. आपको मार्केट में समझना पड़ेगा what is the ongoing clue, what is the ongoing price action developing. उसके हिसाब से things gets developed. Now let's take a different example जहाँ पे price is crossing up and down the VWAP. Okay, so previous trading session 100% dominated by bulls, no doubt in it. Next day market opening up, aggressive down, aggressive up, aggressive down, aggressive up. All these activities are getting developed. Correct? Now, how to use VWAP? Previously notice कीजिए यहाँ पे it's a sideways base. उसके बाद price extended up. Morning overlapping, extended up. Again, it's zigzag, zigzag momentum. Market again went into slow, extended up. Correct? So, in this location, these are the location जहाँ पे multiple transaction has happened between both bulls and bearish players in a slow phase. Okay? And then bulls dominated, price extended. I am telling a scenario जहाँ पे VWAP is like this, price is moving up and down, and then momentum is coming. What to do? In that scenario, I am trying to explain you. You have to understand very clearly. In this case, chasing the red, chasing the green candle, whether it is worthful, I'll tell in never, कोई भी scenario में candle को chase नहीं करना है, especially candle color को chase नहीं करना है. चेक फॉर द क्लू. आपको कोई क्लू मिल रहा है क्या? दैट इज इंपॉर्टेंट. क्लू देके बिना ट्रेड एग्जीक्यूट करने से कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं बनने वाला है. नोटिस कीजिए, दिस इज द बेस. प्राइस जैसे ही उसी रेंज के अंदर आया, फर्स्ट टाइम अग्रेसिवली रिजेक्ट, नेक्स्ट टाइम फिर से रिजेक्ट होके आराम से मोमेंटम दे रहा है, रिवर्सल. तो फर्स्ट टाइम रिवर्सल हाउ इट वाज नॉट रिवर्सिंग, इट वाज अ वीक फॉर्मेशन. एक दिखा रहा है अग्रेशन इज देयर. नेक्स्ट टाइम प्राइस अप्रोचिंग, क्लियरली रिवर्सल दिखा रहा है, राइट? कमिंग, स्टॉप्ड, कैंडल रिवर्स हो रहा है, क्लियर फॉर्मेशन, फॉलो थ्रू, इट इज कमिंग इन, राइट? ये विक है, ये क्लियर इंट ऑफ रिवर्सल है, क्लीन बुलिश कैंडल. उसके बाद प्राइस VWAP के ऊपर टेकिंग इन कंट्रोल, इमीडिएट एक्शन मिल रहा है. करेक्ट? दिस इज द क्लू, क्लियर कट क्लू कि बुल्स आर इन कंट्रोल ऑफ द प्राइस एक्शन. जैसे ही प्राइस VWAP के ऊपर अक्यूमुलेट कर रहा है, स्टेबिलिटी दिखा रहा है, this is where this time VWAP is not giving a entry signal, but VWAP is giving that direction ka signal. Now this directional signal I will be using in my other trading strategies to start executing my what trade? Directional bullish trades. कभी VWAP आपको एंट्री सिग्नल देता है, कभी VWAP आपको डायरेक्शनल सिग्नल दे रहा है, बट कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है. बट उस इंफॉर्मेशन को हम कितने अच्छी तरीके से यूज करते हैं, दैट डिपेंड्स द एक्चुअल प्रॉफिट मेकिंग स्किल. उसके लिए आपको अनवांटेड नॉलेज को रिमूव करके प्रॉपर नॉलेज, जो क्लू के साथ मार्केट को देखने वाले नॉलेज को वी एज अ ट्रेडर शुड ऑलवेज हैव. दैट इज व्हेन द इमोशंस में जो डिसीजन हम ले रहे हैं, when I'm including I am also did multiple emotional trades in the past, now it's completely dropped down. So I'm taking it मैं, including me, I'm telling, right? In this scenario में clue is important. Why I repeatedly telling clue locations is important. Sometime it gives entry signal and sometime it gives directional signal, but कोई ना कोई signal मिल रहा है. ओके, यहाँ पे नोटिस कीजिए. वन मोर, मल्टीपल सिनारियोस, मल्टीपल एग्जांपल्स आर देयर. गैप अप हुआ ऑलरेडी, वन मोर गैप अप. उसके बाद देखिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन, उसके बाद एक कैंडल भी ग्रीन नहीं, प्राइस टिक ही नहीं पा रहा है. ग्रेट रेड कैंडल, प्राइस कमिंग बिलो VWAP. फर्स्ट क्लू, गैप अप इज नॉट सस्टेनिंग, फाइन एंड फेयर डील. उसके बाद देखिए प्राइस इसके टॉप के ऊपर ट्रेड कर रहा है, प्रीवियस डे हाई के ऊपर, फुल साइडवेज, कुछ भी नहीं हो रहा है. प्राइस रेसिस्टेंस ले रहा है फ्रॉम द VWAP, कमिंग बैक डाउन. ऑलरेडी वी हैव अ क्लू व्हाट
गैप अप के बाद बुल्स आर नॉट रेडी, बुल्स गिव अप कर रहे हैं, फर्स्ट क्लू इज ऑलरेडी देयर। उसके बाद लॉर्ड ऑफ साइडवेज, रेसिस्टेंस ले रहा है, रिजेक्शन दे रहा है, एग्जीक्यूशन बिलो दिस, स्टॉप लॉस अबव दिस, बिकॉज यहाँ पे नोटिस कीजिए दिस इज ऑल्सो डाउन साइड एक्शन ओनली, साइडवेज टू मार्केट क्लोजिंग डाउन ओनली, and यहाँ पे there is no major disturbance, only reference level we have this previous day's low, execution stop loss above this, clean and neat move. What happened here? First, we were focused not on the candle, we were not excited by the gap up, we are focusing कि क्या price action चल रहा है, location पे क्या price action चल रहा है। बुल्स वेर वीकर, उसके बाद प्राइस नीचे आया, फुल टाइम पास रेसिस्टेंस ले रहा है, विद द क्लू ऑलरेडी वी हैव दैट बी बुल्स आर गेटिंग वीकर। एंड यहाँ पे देखिए वन मोर इन्फॉर्मेशन, दिस इज साइडवेज बट मार्केट क्लोजिंग फ्लैट टू लो ओनली, कंपेयरिंग टू द ओपन इट्स अ फ्लैट टू डाउन साइड क्लोज ओनली। यहाँ पे भी बियर्स, यहाँ पे भी डाउन साइड क्लोज, no disturbance, clean clear move till previous day's low. Why I'm specifically using this previous day low? Because प्राइस यहाँ से अग्रेसिवली एक रिवर्सल दिया था, दैट इज द रीजन दिस प्रीवियस डे लो आई एम गिविंग मोर इंपॉर्टेंस। क्लियर? सो डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट क्लूज कम्स इन, सो इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट एज अ ट्रेडर, यू नीड टू सी इन अ पर्सपेक्टिव ऑफ बुल्स विसेस बियर्स। मार्केट को कभी भी बुल्स विसेस बियर्स के पर्सपेक्टिव में देखना जब आप शुरू करोगे, योर एंटायर अप्रोच will change. So this video, it is just a clear cut pillar foundation for you traders to start looking the market in terms of clue, not in terms of whatever style you are randomly doing or based, don't look at based on the candle color. Clear? So traders, make sure to subscribe my YouTube channel and turn on the bell icon so you'll get all the notifications of the video on time. If you find the video useful and worthful, make sure you can click a like on this video. Stay connected with us, and obviously you can check the link in the description. All my Telegram channel, WhatsApp community link will be there, so you don't miss to or don't forget to join, because you'll getting a lot of live market updates, clear information about the market on time every time.